Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you to the course of Digital Image Processing, and today is our fourth lecture. So today we will study a bit about camera calibration and stereo imaging. So before going into that, first we have to have the summary of previous lecture so that we can build upon it, and as we have the basic ideas of the inverse prospective transformation and also imaging geometry, where the world coordinate system and the camera coordinate system, they were aligned. So we studied that once we assume that they are aligned, then the equation is a bit different from the one in which we do not have a line system. So if we have a line coordinate of camera and the imaging, then for that we have some steps to perform. So first we assume that it is aligned, then we make it panning, and then we make the tilt, and then we make the center, the camera center with the gimbal. And also we studied a bit about how to have example of the one object which is in a 3 dimension, and then how the image coordinates are aligned with it, and how do we compare it. So in today's lecture we will discuss about calibration of camera, how to calibrate the camera, what it means by calibration, and also we will see if we have a 3D point in one 3-dimensional space, then how do we take an image and how do we analyze that where it is lying. For that, what we do, we take 2 images from different directions, and then we compare it, and that we call it as a stereo image. So if we take a stereo image, how do we calibrate then the cameras, and how do we identify the values for it? And after that we will also study a little bit if we have stereo images, then there are some stereo corresponding problems, and then we will see the complexity of it. We will not go in very detail, but just to have the idea what are the complexities in it. So what we need for the camera calibration, that we need to know that normally the cameras, they are not perfectly aligned. So in a general situation, if you remember that we talked about that if the camera is on the gimbal, then the camera is with the pan of alpha value and tilt of it was pan of theta and tilt of alpha value. And then what we do, we have the displacement of the gimbal center from origin W0. So we take this as a W0, and then also displacement of the image place center from a gimbal center R. So we take the R value from here, and then the W value, W0, is from here. So this because we first compare the values of the gimbal with the R, and then we make because this we know that this is always align the gimbal, and then after that we tilt we make the pan, and then after that we make the tilt operation. So if we have a point W and we want to find out the corresponding image point C, then what we need, we will need to find a set of transformation to bring the camera coordinate system and the world coordinate system in perfect alignment. तो अगर हमारे पास एक पॉइंट C है जो कि इमेज का है, और हमारे पास वर्ल्ड पॉइंट W है, तो अगर हमने उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, तो ट्रांसफॉर्मेशन से पहले हमें क्या करना होगा, पहले हम उसको अलाइन करते हैं आपस में. तो जब अलाइन हो जाएंगे, देन अप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोस्पेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन, टू ट्रांसफॉर्म द 3D वर्ल्ड पॉइंट टू करस्पॉन्डिंग इमेज कोऑर्डिनेट्स. और फिर हम जो इमेज के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसके अगेंस्ट वो सारी ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं जो 3D की ट्रांसफॉर्मेशन होती है. और हमारे पास बेसिक जो स्टेप्स थे वो 4 स्टेप्स थे.
तो उनमें से हम पहले देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ गिम्बल सेंटर फ्रॉम ओरिजिन बाय W। हम वो डिस्प्लेसमेंट सेंटर आइडेंटिफाई करते हैं जो W0 है, जो यहाँ पर हमने डिस्कस किया, ये वाली वैल्यू W0। तो सबसे पहले हम ये डिस्प्लेसमेंट आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, पैन ऑफ x एक्सिस बाय थीटा। अब हम उसकी पैनिंग करते हैं x एक्सिस के अगेंस्ट। अब ये हमारे पास x एक्सिस के अगेंस्ट जो उसकी पैनिंग होगी हम वो आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद हम उसका अल्फ़ा की वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं जो कि टिल्ट है। तो टिल्ट की वैल्यू नॉर्मली हम z के अगेंस्ट आइडेंटिफाई करते हैं, तो z के अगेंस्ट अल्फ़ा की वैल्यू आइडेंटिफाई होगी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज प्लेन विद रिस्पेक्ट टू द गिम्बल सेंटर बाय r। और हमारे पास फोर्थ स्टेप जो है वो ये है कि हम डिस्प्लेसमेंट आइडेंटिफाई करते हैं इमेज प्लेन की विद रिस्पेक्ट टू द गिम्बल सेंटर बाय r, क्योंकि हमारे पास ये जो r की वैल्यू है ये यहाँ पर आ रही है जो कि गिम्बल सेंटर की है विद रिस्पेक्ट टू द कैमरा। तो अब हमने ये वाली जो 4 स्टेप्स हैं जब हम ये परफॉर्म कर लेते हैं तो ये हम कहते हैं कि अब हमने ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेप कंप्लीट कर लिए। तो इसके बाद हम जो है t की वैल्यू अप्लाई कर देते हैं। इफ़ द कैमरा सेंटर इज़ डिस्प्लेड बाय वेक्टर W0, so all the word coordinate point will be displayed by the vector which is negative of W0। अब हमने ये देखा था कि अगर गिम्बल सेंटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं W0 के साथ, तो जो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट आते हैं इमेज के, तो हम उसको लेते हैं विच इज़ इन नेगेटिव ऑफ W0। तो हम नेगेटिव ऑफ W0 लेते हैं और वो सारे आ जाएंगे -x0, -y0, -z0 एंड 1। यूनिफॉर्म मैट्रिक्स बनाना चाहेंगे तो उसके लिए हमारे पास इस 1 का होना ज़रूरी है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम पैनिंग करते हैं। तो पैनिंग में हमने ये देखा था कि अब हमने z डायरेक्शन में उसकी पैनिंग करते हैं और वो वैल्यू जो है वो उसकी एंगल थीटा है। तो ये अगर हमारे पास कैमरा की कैलिब्रेशन है तो ये x हो गया, ये y हो गया और ये हमारे पास z है। तो इस z के अगेंस्ट हम उसकी पैनिंग करेंगे। तो जब हम ये पैनिंग करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती हैं कोसाइन थीटा, साइन थीटा 0 0 और माइनस साइन थीटा, कोसाइन थीटा 0 0 0 0 1 0 0 0 0 और 1। और ये हमारे पास इस वजह से इसमें चेंजेस नहीं आ रहे कि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक एंगल में हम चेंजेस ला रहे हैं, तो वो है z एक्सिस में। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम अल्फ़ा के साथ उसकी टिल्ट चेक करते हैं कि अब अल्फ़ा हमारे पास नॉर्मली जो उसके टिल्टिंग है वो हम जो डायरेक्शन है उसकी x एक्सिस में देख रहे होते हैं। So we have to find out what is the corresponding transformation matrix for the tilt operation which has to append all the 3D points। तो जब हमारे पास इसकी वैल्यू W0 है तो हम इसकी टिल्ट ऑपरेशन जब परफॉर्म करेंगे तो उसकी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ आ जाती हैं 1 0 0 0 0 कोसाइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा 0 0 माइनस साइन कोसाइन अल्फ़ा 0 0 0 0 और 1। और जब हम इनको कंबाइन करते हैं टिल्ट ऑपरेशन को और साथ में जो रोटेशन जो हम पैनिंग कर रहे हैं, तो जब हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास मैट्रिक्स की सिचुएशन ये आती है कि कोसाइन थीटा साइन थीटा 0 0 माइनस साइन थीटा कोसाइन अल्फ़ा, कोसाइन थीटा कोसाइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा साइन थीटा साइन अल्फ़ा माइनस कोसाइन थीटा साइन अल्फ़ा कोसाइन अल्फ़ा 0 0 0 और 1। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम कैमरा के सेंटर को कैलिब्रेट करते हैं, उसको अलाइन करते हैं हम R के साथ। तो कैमरा सेंटर डिस्प्लेस्ड बाय R वैल्यू, तो ये वैल्यू जो यहाँ पर R की आ रही थी हम उसके साथ उसकी डिस्प्लेसमेंट चेक करते हैं और वो हमारे पास वैल्यू आ रही हैं t = 1 0 0 0 माइनस R1
और सेम इसी तरह -R2 फिर -R3 और 1 की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो सारी की सारी ट्रांसफॉर्मेशन है हम इनको ला सकते हैं एक इक्वेशन के अंदर। तो और इनके लिए ये इसकी जो तरतीब है ये लाजमी है कि इसी तरह हो, वरना तो हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट होंगे। सो होमोजीनियस वर्ल्ड point WH will be mapped to homogeneous image point CH as given by the transformation। तो हम ये वैल्यूज़ लेते हैं T, R और G की, और उसके बाद हम ये W की वैल्यू जो कि होमोजीनियस वर्ल्ड पॉइंट है, तो हम इनके साथ इसकी P के प्रोस्पेक्टिव डिफ़ाइन कर लेते हैं। प्रोस्पेक्टिव हमारे पास अलग होता है, तो क्योंकि वो ये इमेज की डिटेल्स हैं, वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा। तो अब हमने इसके बाद जब हम वैल्यूज़ आइडेंटिफाई करना चाहें फ्रॉम द होमोजेनियस कोऑर्डिनेट द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज पॉइंट आर ऑब्टेन्ड एज, हम x की वैल्यू लेते हैं और y की वैल्यू। तो अगर हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ जाएं तो हम बहुत इजीली अलाइनमेंट के बाद उसको उसकी वैल्यूज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई और ये हमारे पास y की वैल्यूज़ आ गई। अब हम क्या करते हैं कि हम जाते हैं कैलिब्रेशन की तरफ, कि अगर हमने कैमरा को कैलिब्रेट करना है तो वो किस तरह होगा। द ट्रांसफॉर्मेशन विच इज़ इन्वॉल्व व्हाट वी डू इन हियर, वी हैव द PCH इज इक्वल टू PTRGW। अब ये हमारे पास वो वैल्यूज़ आ गई। अगर हम इस PTR और G को लेते हैं और इसकी बजाय हम सिर्फ A यूज़ कर लें, तो A हमारे पास वो ऑल फंक्शंस जो हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हैं, हम उससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम बहुत इजीली इसको फिर आगे यूज़ कर सकेंगे। तो अब हमारे पास क्योंकि ये जो सारे हैं ये 4x4 मैट्रिक्स के होते हैं, इस वजह से इस A का जो साइज़ है वो भी 4x4 हो जाएगा। सो द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ऑफ dimension 4x4, this matrix A will also be 4x4 matrix. The transformation T, R and G, they depends upon the imaging setup. So the G correspond to the translation of the gimbal center from the origin of the 3D world coordinate system. जो G है हमारे पास वो हम लेते हैं जो डिस्प्लेसमेंट है, जो उस की ट्रांसफॉर्मेशन है, हम उसको लेते हैं गिम्बल से, जो उसकी वैल्यूज़ आ रही हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो R है कोरिस्पॉन्ड टू द पैन एंगल, हम R को एज अ पैनिंग एंगल ले रहे होते हैं, जो हमने ऑलरेडी उसको आइडेंटिफाई किया था। एंड द टिल्ट एंगल, और जो क्योंकि R हमने यहाँ पर जब हम डिफ़ाइन कर रहे थे कि हम R की वैल्यूज़ ले सकते हैं, ये R क्या है, इन दोनों को जब हम कंबाइन कर लेते हैं तो इस वजह से इनमें हमारे पास R में हमारे पास टिल्ट और पैनिंग दोनों आ जाते हैं। और T correspond to the translation of the image plane center from the gimbal center, और T जो है हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जो इमेज प्लेन के सेंटर से और गिम्बल के सेंटर से, जो एक्चुअली हम आइडेंटिफाई करते हैं यहाँ पर R की वैल्यू के साथ। P is a prospective transformation matrix property of the camera. P has a term lambda which is a focal length of the camera, और P हमारे पास क्या है, prospective transformation है। तो ये हमारे पास नॉर्मली हम इसकी वैल्यू लेते हैं lambda, जो कि lambda हमारे पास focal length of the camera है। So it is possible that for a given camera for which a focal length lambda is known, I can find out what is the corresponding prospective transformation matrix P। तो अगर मुझे lambda की वैल्यू का पता है तो फिर मैं ये prospective transformation P की वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। Where to find out the transformation matrix T, R and G, I have to do the measurement physically, that what is the translation of the gimbal center from the origin of the 3D world coordinate system, and what is the pan angle and what is the tilt angle, and also I have to measure physically what is the displacement of the image center from image plane center of the gimbal.
मतलब ये कि अगर हमने P की वैल्यू तो हमें मिल जाएगी अगर तो हमारे पास लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, जो कि नॉर्मली नॉन होती है कैमरे के लिए, क्योंकि वो फोकल लेंथ है उसकी। लेकिन जो बाकी हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं R की और G की वैल्यूज़ आ रही हैं, तो वो काफ़ी सारी मुश्किल हैं, वो हमें फ़िज़िकली लेनी पड़ती हैं। मतलब ये कि अगर हम अगर हम उसके टिल्ट का एंगल निकालें और फिर हमें उसकी पैनिंग की वैल्यू निकालनी है कि वो थीटा की वैल्यू क्या है, और साथ में हमने डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालनी है G की, तो ये जो सारी वैल्यूज़ हैं अगर, और T की वैल्यू निकालनी है, जो कि हमारे पास वैल्यू आ रही है जो सेंटर है गिम्बल का और जो इमेज प्लेन का सेंटर है उसके साथ जो डिस्प्लेसमेंट्स R की वैल्यू आ रही हैं, तो वो अब इस सिचुएशन में हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती हैं अगर इन चीज़ों को हम आइडेंटिफाई करें फिज़िकली। एंड इन मैनी केसेस मेजरिंग दीज quantities is not very easy, as it's more difficult if an imaging setup is changing quite frequently. So in this case, it's always better that first we have an image setup and then try to calibrate the imaging setup with the help of images of known point of 3D object that will be obtained with the help of the same imaging setup. अब अगर हम ये कर लें कि हम कोई सेटअप ले लें, इमेजिंग सेटअप के मतलब हमें उस इमेज में पहले से कुछ वैल्यूज़, कुछ पॉइंट्स का पता हो, तो अगर हम उसको ले लें और वो वैल्यूज़ और वो जो पॉइंट्स हैं उनसे हम ये जनरेट कर लें, तो अब उसके बाद कैमरा जहाँ भी होगा या जिस लोकेशन पे भी होगा, चूँकि हमने ये वैल्यूज़ कैलकुलेट की होंगी, तो वो हम चेंज करते जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? So by calibration, what it means that we have to combine the transformation matrix for the given imaging setup, which is A, which is nothing but the product of P, T and R and G. So there are 4x4 matrix, and what we have to estimate the different elements values of the matrix A. So if we can estimate the different elements of total transformation matrix A from some of all the images from some of the known images, then we can have a point in the 3D which we can correspond with the image. तो अगर हम जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर हम ये वैल्यूज़ आइडेंटिफाई करें किसी तरीके से और मैथमेटिकली हम आइडेंटिफाई कर सकें, तो हम ये कर सकेंगे कि ये जो इमेज की ये जो वैल्यूज़ हैं कैमरे की, ये हम उस इमेज के साथ कोरिलेट कर लेंगे, और जब हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी तो फिर हम आगे इसको यूज़ करेंगे। सो not only that, if I have a image point in the image, by applying the inverse transformation, I can find out what will be the equation of the straight line on which the corresponding world point will be lying. So in this calibration means that we have to estimate the different values of this matrix A. Now let us see how we can estimate these values by matrix A. So for that, if I find out what is the matrix equation of the form CH is equal to A and WH, तो अब ये हमें पता है कि ये हमारे पास वो जो है एवरेज ऑल ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन है, हम उसको लेते हैं, और जो WH है वो वर्ड कोऑर्डिनेट है ऑफ 3D पॉइंट, एंड CH इज़ द इमेज पॉइंट ऑन द इमेज प्लेन अगेन इन द होमोजीनियस फॉर्म। और तो CH हमारे पास सिंपल वो पॉइंट हो गया जो कि इमेज प्लेन के अंदर आ रहा है, और A हमें ऑलरेडी पता है। नाउ वी एक्सप्लेन दिस मैट्रिक्स इक्वेशन where assume that the value of K is equal to 1. तो अब हम क्या करते हैं कि हम K की वैल्यू 1 लेते हैं यहाँ पर, और हमें ये पता है कि W की जो वैल्यू है वो हमारे पास
आती है कैपिटल X, कैपिटल Y एंड कैपिटल Z, और ये हमारे पास अप्लाई करता है कि WH इज इक्वल टू KX KY KZ और K। अब ये हमें पता है कि CH को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर तो CH कैमरा है, और तो कैमरे की वैल्यूज़ हम कैसे सेट कर सकते हैं, वो हो सकती हैं CH 1, CH 2, CH 3 and CH 4। और हमारे पास A की वैल्यूज़ अगर जो A है मैट्रिक्स, वो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, A41, A42, A43, A44। तो अब ये हमारे पास A की वैल्यूज़ हो गई। तो हमारे पास WH की वैल्यू क्या है, वो आ जाएंगी X, Y, Z और 1। ठीक है। अब हम आगे इसको अगर इस इक्वेशन को परफॉर्म करें, आगे इसको अप्लाई करें, इनकी कम्बिनेशन बनाएंगे, तो वो कैसे होगी। We have also studies that once we have the homogeneous image coordinate CH1, CH2, CH3 and CH4, then we have already discussed that the corresponding Cartesian coordinate in the image plane is given by X is equal to CH1 divided by CH4, and Y is given by CH2 divided by CH4. So this is simply conversion from the homogeneous coordinate to Cartesian coordinate system. Now here if I replace the values of CH1 and CH2 by X time, then CH4 and Y time CH4 in our matrix equation, then the matrix equation will look like X CH4 Y CH4 and CH2 and CH4। तो अब हमने सिंपली इसको रिप्लेस कर दिया। तो जब हम रिप्लेस करते हैं तो बाकी जो हैं वैल्यूज़ सेम आएंगे। ठीक है, A11, A12, A13, A14, 21
A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, A41, A42, A43, A44 और साथ में हमारे पास x, y, z और 1 की वैल्यूज आ जाएंगी. So now if I expand this equation, the same equation with the values of ch4 and ych4 and xch4 and also this ch2 and ch4, then what we will get is, so when we solve it, then we will have the value of x ch4 is equal to a11x plus a12y plus a13z plus a14 और x सॉरी जो हमारे पास y की वैल्यूज़ है ych4 is equal to a21x plus a22y plus a23z plus a24 और ch4 जो है वो सिंपली हमारे पास आ जाएगा a41x प्लस a42y प्लस a43z प्लस a44. ये x और y जो हैं ये हमारे पास कैपिटल में है. अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करें, ये आपको पता होगा कि हमने z की वैल्यूज़ इस वजह से नहीं लिए जो हमारे पास फोर्थ आता है, क्योंकि वो हमारे पास इम्पोर्टेंट नहीं है. हमारे पास वो जो थर्ड फैक्टर है x, y और z की सिचुएशन में, तो हम वो नहीं लेते. लेकिन अगर हम ये देखें कि ये जो दो इक्वेशंस हैं, ये अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको एक्सपेंड करें तो कैसे आएगी. So now what we do, we put this ch4 value, which is this one, instead of x, capital X, capital Y and capital Z, then we will see what will be the outcome. So it can be like a 11 x plus a 13 z minus a 41 x minus a 42. यहाँ पर हमारे पास कैपिटल X आ जाएगा माइनस a 42 और फिर X और Y आ जाएंगे. ठीक है, माइनस a 43 X और Z आ जाएंगे. ठीक है, और माइनस a 44 X और प्लस a 14.
इज इक्वल टू 0 और दूसरा क्या आएगा a21x प्लस a22y प्लस a23z माइनस a41yx माइनस a42y ये हमारे पास कैपिटल आएगा। इसके बाद माइनस a43 और माइनस a44 प्लस a24 is equal to 0. So now if we have all these values and if we want to know the CH values with the earlier two equations, so if we replace it the CH values with the two equations, then these two equations x CH4 y CH4 will simply be converted in the form of this one and this one. Now if we study these two equations, we will find out that the x and y and the small xy, the capital one and the small xy at the coordinate in the image plane of the point in 3D world coordinate system whose correspondent image plane values by a capital X and capital Y values and also the Z. So if we take a set of images from which the point in the 3D world coordinate system, that is capital X, capital Y and capital Z are known, then we also know that what will be the corresponding image point in the coordinate in the image plane. So for every such pair of reading we get two equation. One is the first equation, the other one is the second equation. Now if we study this particular two equation, you will find out that there are 6 unknown values for each. So there are 1, 2, 3, 4, 5, 6. So these 6 unknown values and totally they become 12 values. So in our camera, so if we know all these 12 values, then this means that we can find out the values of our camera. So what is the total transformation matrix of A using which we can find out is that the image point of 3-dimensional coordinate system and for given point in the image plane. So what are the values of these all is that if we find out all this, then we can find out the values of A. मतलब ये कि अगर हम इन वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई कर लें, इनके लिए हम वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लें, ये अननोन वैल्यूज़ हैं, तो अगर हमें ये मिल जाएं तो हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे कैमरे की लोकेशन क्या है। उस तो अगर हम ये कर सकेंगे तो हम ये कहेंगे कि अब हम कैलिब्रेशन कर रहे हैं, कैमरे को हमने कैलिब्रेट कर लिया है। हम अपने इमेज के अंदर जो हमारे पास जो 3D वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम उसकी वैल्यूज़ आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो ये जो 12 हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं, ये 12 हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगर हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हम आगे इसको यूज़ कर सकेंगे कैलिब्रेशन के लिए। So the problem still exists that given an image point we cannot uniquely identify that is
what is the location of 3D point because of the z value. अब हम ये तो पता कर लेंगे कि ये जो इमेज है इसकी लोकेशन क्या है 3D वर्ल्ड पॉइंट में, कैमरे की कैलिब्रेट कर लेंगे, लेकिन जो हमारे पास जो 3D में जो ऑब्जेक्ट है या जिस चीज़ की हम इमेज ले रहे हैं उसकी एग्जैक्ट लोकेशन हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास z की वैल्यू हमेशा अननोन है. टू आइडेंटिफाई द थर्ड वर्ड point or the x, y and z coordinate of the third 3D word point, we can use another camera. अब अगर हम कोई दूसरा कैमरा यूज़ करें तो उसके थ्रू हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो x, y की वैल्यूज़ तो हमें पता है लेकिन z की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हो सकती हैं. तो उसके लिए हमें अगर दूसरा कैमरा होगा तो उनको हम आपस में मैच कर सकेंगे. स्टीरियो इमेजिंग. The image 1 takes image with the help of one camera and the image 2 takes image with the help of another camera. अब हम करते क्या हैं कि या तो हम अलग अलग कैमरा यूज़ करें या सेम कैमरा हो लेकिन वो अलग लोकेशन से हो तो भी हम सेम ऑब्जेक्ट को वो वर्ड पॉइंट को आइडेंटिफाई कर रहा हो. तो अगर हम इस तरह करेंगे तो इससे हमारे पास ये जो z की वैल्यूज़ हैं ये हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे. तो अगर हम z की वैल्यूज़ आइडेंटिफाई करेंगे तो वो उसका मतलब क्या होगा कि हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस लाइन के ऊपर आ रहा है. तो अगर हम इस लाइन के ऊपर आ रहा है तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि इनका इंटरसेक्शन कहाँ पर होगा और इस लिहाज से हम वो जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. So what it means that the left image coordinate system is the same as the 3D word coordinate system. अगर तो हम ये assume करें कि जो इसके x और y की जो values हैं वो exactly वो हैं जो हमारे पास 3D word के हैं. तो वर्ड को हम अगर रिप्रेजेंट करते हैं WX कैपिटल X कैपिटल Y और कैपिटल Z के साथ और जो हमारे पास इमेज के कोऑर्डिनेट्स हैं वो स्मॉल लोअर केस x एंड y की वैल्यूज़ हैं और जो एग्जैक्टली इस x की वैल्यूज़ हैं x1 और y1 की वो कैपिटल X और कैपिटल Y की भी हैं. तो अगर ये सेम होंगी तो इसका मतलब ये कि ये अलाइंड है. तो ये आपस में अलाइन है लेकिन जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x2 और y2. तो इमेज 2 के लिए जो कि राइट साइड पे है तो वो जो हैं वो उसके साथ कोऑर्डिनेट नहीं है वर्ड पॉइंट के साथ. तो ये हमारे पास डिफरेंट आ जाएगा. तो दोनों आपस में इस लिहाज से डिफरेंट होंगे. नाउ अ पॉइंट W in a 3-dimensional word in 3-dimensional space we will find out that the corresponding image point in image 1 is given by x1 y1 and in image the image point in the same point W in the image 2 is given by x2 y2. Assume that both camera are identical. That means that they have the same value of wavelength lambda. So they will have the same prospective transformation as well as the inverse prospective transformation. हम ये assume करते हैं कि इनकी resolution और जो focal length है वो same है तो इस वजह से जो transformation होगी और inverse prospective transformation होगी वो same आएगी. Now once I know that the image 1 in the image point correspond to W is the point x1 and y1, then by applying the inverse prospective transformation we can find out the equation of the straight line on which the 3-dimension point W will exist. अब अगर हमें ये x और y की वैल्यूज़ आइडेंटिफाइड हैं तो हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं इनवर्स प्रोस्पेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन से कि ये जो W पॉइंट है ये सारे पॉइंट्स एक लाइन में लाई कर रही हैं. ठीक है, ये हमने देखा था पहले कि हम ये आइडेंटिफाई तो नहीं कर सकते कि ये कहाँ पर पड़ा हुआ है, z की वैल्यूज़ तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या ये इस लाइन के ऊपर हैं कि नहीं, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रही हैं कि नहीं. Similarly, from image 2, if we know the location of x2 and y2,
in image point, we can apply the inverse prospective transformation, then we can get the equation of another straight line on which the W will exist. So now we find out by using these two images we can get two straight line equation. So by solving these two straight line equations, we can get the value for the value W. We have now the general stereo image setup, which means that there is no alignment between the left camera and the right camera, or between the first camera and the second camera. So for doing all the mathematical equation, we have to again apply a set of transformation to one of the camera coordinate systems, so that both camera coordinate systems are aligned. So these transformation will again involve many of the transformation for some translation, which is rotation, and possibly if there is some scaling because of the resolution, then we will also have to apply that, and also panning, and then the coordinates of the center of the gimbal. So there is a lot of calculation to be done. But if we know that the positioning of the camera is in our control, then we can consider this as a generalized setup. So instead of generalizing setup that both cameras are not aligned, we can at least know one of the camera is aligned. So we can use the same coordinates for getting the other one. अब ये हमें पता है कि अगर हम जर्नलाइज सिचुएशन लेते हैं तो उस सिचुएशन में जो दोनों कैमरे हैं वो अलाइन नहीं होंगे. अगर अलाइन नहीं है तो पहले हमें उसको अलाइन करना होगा, और उसके लिए हमें बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड्स अप्लाई करने होंगे जो इससे पहले हमने देखे. तो अगर हम ये एज्यूम कर लें कि ये जो दोनों कैमरे हैं इनमें से एक कैमरा जो है, नॉर्मली हम कैमरा 1 को लेते हैं, इमेज 1 को, कि ये परफेक्टली अलाइन है जो वर्ड कोऑर्डिनेट्स हैं उनके साथ. तो अगर ये अलाइन होंगे तो हम इनकी वैल्यूज़ को आगे यूज़ करते हुए दूसरे की अलाइनमेंट और जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो वैल्यूज़ हम निकाल सकते हैं. So now the camera setup will look like something this. Here we find out that two cameras in the image plane 1 and the image plane 2, they are in the same plane. Okay. The x-axis of both the cameras are in coordinate system and they are collinear. The y-axis and the z-axis, they have a shift of value b. So this shift b, this value b is called a camera displacement. We assume that both the camera are identical, otherwise that they have some same resolution. They have the same focal length w for the value world point w. Again, here in the 3D point w, we have the image 1 that correspond to point x1, y1, and in image 2 we have the corresponding image point x2 and y2, and this is what we call it the camera displacement b. And here is our focal length, lens of the center that we identified with the value of lambda, and that lambda is normally identifiable. So now we can also move this into another setup, so where we can identify the values very easily. So this imaging setup can be seen as a section between x and y plane of both the cameras, and are now perpendicular to the plane. So we have x-axis which is horizontal, the z-axis which is vertical, and the y-axis which is perpendicular to this plane. So in this figure we assume that the camera coordinate system of one of the camera, in this case camera 1, which is also called left camera, is aligned with the 3D world
coordinate system, capital X, capital Y, and capital Z. The coordinate system of the left camera is assumed by X1, Y1, and Z1. The coordinate of the right camera is assumed by X2, Y2, and Z2. Now, given this particular imaging setup, you will find that any particular image point, say W, with respect to the camera 1 and camera 2, this W point will have the same value of Z coordinate. It will have the same value of Y coordinate, but it will have different values of in the Z coordinate, because this camera is shifted and the displacement is with the B value, and the values of Z are changing. So that's why we only have the Z values that are different. So now for that calculations, we have to go for the basic mathematics that can help us for identifying the values. So we have seen that from image 1, the point is W is X1 and Y1, and also we have same thing as X2 and Y2. Because they both are in the same direction for W. So these are the image coordinate in the left camera and in the right camera. Now by applying inverse prospective transformation, we find out that the equation of the straight line with respect to the left camera of the point W will lie in the given equation, can be like x1 is equal to x1 by lambda and lambda minus z, and for x2 is equal to x2 by lambda and lambda minus z. Now this x1 which is the x coordinate of the point W with respect to the camera coordinate of the camera 1, and then the capital X2 is the coordinate of the 3D point W with respect to the camera of the camera points with the second camera. So if you remember the argument of the camera where the camera are displaced by the displacement B, so that with respect to that camera argument we can easily find out the values of x2 will be simply x1 plus b. Now if I replace these values of x2, then I can get the set of equation with the given x1 by lambda, x1 by lambda, lambda minus z plus b, and also for which is x2 minus z. So I can get the equation of form of z to lambda minus lambda times b and divided by x2 minus x1. So how can we do it? Z is equal to lambda minus lambda b by x2 minus x1.
So you find out that the z is the coordinate of 3D point with the respect to w to the coordinate system of the first camera, and also aspect of the coordinate with the second camera. So this means that z values of the 3D point for which the left image is x1 and y1 and the right image is x2, y2, I can estimate these values of z from the known wavelength lambda. From the knowledge of the displacement between the two camera with b, and from the knowledge of difference of x coordinate, and that is x2 minus x1 in the left image and the right image. This x2 minus x1, this term normally is particularly the dispersant of the value. So if I know the dispersity of the particular point in the left image from the right image, then I can also know the lambda value, which is normally the focal length, and the displacement between the two cameras. Then we can find out the corresponding depth value of z. अगर हमारे पास ये x2 की वैल्यू और x1 की वैल्यू नॉर्मली जो इमेज की कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज़ हैं, अगर ये हमारे पास आ जाएं, और लैम्डा जो है वो फोकल लेंथ है जो वो भी हमारे पास कैमरे की वजह से होगा, और जो b है वो डिस्पर्समेंट है, तो हम z की वैल्यूज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं. और z की वैल्यूज़ वो हैं जो कि वो डेप्थ की वैल्यूज़ हैं कि वो कहाँ पर वो लाई कर रहा है, उसकी पोजीशन कहाँ पर होगी. तो इसका मतलब ये कि हमारे पास अगर तो ये दो वैल्यूज़ आ जाती हैं x2 और x1 और b की, तो हम बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एंड वंस वी नो द डेप्थ वैल्यू, देन वी कैन आल्सो फाइंड आउट द x कोऑर्डिनेट एंड द y कोऑर्डिनेट इन द 3D point w with respect to the 3D world coordinate system, for which we have already seen the equation are given by x is equal to x1 by lambda minus z, and y is equal to y1 by lambda minus z. So first we have compute the value of z from dispersity to know the camera focal length and displacement between the camera, and then from this value of z the image coordinate in the left image, and then which is x1 and y1, then we can also find out the values of capital X and capital Y values coordinates in the 3D point. Now to compute a point in the left image, what we will be corresponding point in the right image. So वो अब तक हमने जो देखा वो ये था कि अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ अगर हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये जो इसकी लोकेशन है वो कहाँ पर है 3D वर्ल्ड में, एक्स वाई और जी की वैल्यूज़, तो अगर हम दो कैमरा लेते हैं और दोनों कैमरे जो हैं वो एक पॉइंट को देख रही हैं और हमारे पास जो डिस्पर्समेंट है कैमरेज़ की वो बी की वैल्यूज़ है. अब अगर हम ये करें कि हम अगर एज्यूम करें कि ये एक कैमरा 1 जो है लेफ़्ट ये अलाइन है एग्जैक्टली उसके साथ, तो हमारे पास x1 और कैपिटल X की वैल्यूज सेम होंगी, y1 और कैपिटल Y की वैल्यूज सेम होंगी. अब इसके लिए हमारे पास क्या चाहिए था, हमें एक लैम्डा की वैल्यू चाहिए और हमें b की वैल्यू चाहिए और x1 और y1 की वैल्यू चाहिए. अगर ये हमारे पास आ जाती हैं तो हम बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं z की वैल्यूज़ पर. तो अब क्योंकि फॉर्मूले के लिए हमारे पास x2 माइनस x1 चाहिए, तो x2 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी होगी क्योंकि दूसरा जो कैमरा है उसको हम जब अलाइन कर लेते हैं तो हम x2 की वैल्यूज़ जब निकालेंगे तो वो हम इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. तो जब हम इसको यूज़ करेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी. तो जब z की वैल्यूज़ आ जाएगी तो हम उससे बहुत ईजीली उस 3D वर्ल्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं.
अब हमने ये करना है कि हम ये देखें कि अगर कोई एक इमेज है, उसके अंदर हमारे पास एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट को हम कैसे कंपेयर करेंगे दूसरे के साथ जो कि दूसरे इमेज में है। अब दूसरे इमेज के लिए इसकी कम्प्लेक्सिटी हम देख लेते हैं, इसके हमारे पास क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। अगर हमारे पास एक इमेज है और उसमें CL हम लेते हैं लेफ़्ट इमेज और CR लेते हैं राइट इमेज। इसकी जो लोकेशन है पॉइंट यहाँ पर है, तो हम इस पॉइंट की लोकेशन लेते हैं x1 y1 और जो यहाँ पर पॉइंट है इसको लेते हैं x2 y2। अब ये लेफ़्ट हो गए और ये राइट हो गए। अब हमने क्या करना है, अब अगर हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये पॉइंट कॉरस्पॉन्ड करता है इस पॉइंट के साथ, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्टीरियो कॉरस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम। और हम उसकी कम्प्लेक्सिटी देख रहे हैं कि हमारे पास क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं इसके लिए। तो प्रॉब्लम ये हो सकता है कि अब हम अगर हमने इसकी कंपैरिजन करनी है तो 1 by 1 कंपैरिजन हम शुरू करें। तो अगर हम 1 by 1 कंपैरिजन करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो n की वैल्यूज़ हैं, अगर हम इसको n लेते हैं n डायमेंशंस, ठीक है, तो अब n डायमेंशंस हैं मैट्रिक्स की, तो n पावर 2 लेंगे हम, क्योंकि ज़ाहिर है जब हम 2 डायमेंशन में होंगे, तो अब 2 डायमेंशन में होंगे तो हमने इसको सर्च करना है, इस इमेज के साथ लेफ़्ट राइट इमेज के साथ लेफ़्ट को कंपेयर करना है। तो जब हम सर्च करेंगे तो हमारे पास कम्प्लेक्सिटी बन जाएगी n4 की, ठीक है, टोटल। तो अगर हमारे पास n4 की वैल्यूज़ आ रही हैं तो उसके लिए आइडेंटिफिकेशन जो है वो काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाएंगे और ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा कि जब हम इसको सिंपली कंपैरिजन करें n4 टाइम की। अब इसका हल क्या हो सकता है, हम इसका हल ये निकाल सकते हैं कि हर जो इमेज हम ले रहे हैं, बजाय इसके कि हर एक पॉइंट को चेक करें, हम उसको एक ख़ास डायरेक्शन में चेक करें। डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास इमेज के कोऑर्डिनेट्स हैं हम उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। वो हमें ये हेल्प कर सकता है कि एग्जैक्टली हमें कहाँ जाना चाहिए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इफ़ x पॉइंट वी हैव x कैपिटल X capital Y capital Z in a 3D space for a left image is given by x1 y1 z1 for a camera 1 हम ले लेते हैं, ठीक है, जो लेफ़्ट है, और x2 y2 और z2 लेते हैं फॉर अ कैमरा 2, ठीक है। अब इसके लिए अगर हम वैल्यूज़ आइडेंटिफाई करेंगे तो वो किस तरह होंगी कि हमारे पास x1 की वैल्यू है लैम्डा x 1 बाय लैम्डा माइनस z1 और y की वैल्यूज आएंगी, y1 की वैल्यूज आएंगी लैम्डा y1 बाय लैम्डा माइनस z। सेम इसी तरह x2 के लिए z2 और y2 की वैल्यूज आएंगी लैम्डा y2 बाय lambda minus Z2. So now in the imaging setup we have seen that the capital Z1 is equal to capital Z2 and capital Y1
is equal to capital Y2. सो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास जो z की वैल्यूज़ हैं, क्योंकि ये एक जगह पर पड़ी हुई हैं, तो ये जो z की वैल्यूज़ हैं ये भी सेम रहेंगी और y की वैल्यूज़ जो कि परपेंडिकुलर हैं वो भी सेम रहेंगी। जो वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं वो हैं x की वैल्यूज़, ठीक है। और x की वैल्यूज़ कैसे चेंज हो रही हैं? b की वजह से। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो x की वैल्यूज़ हैं वो इक्वल नहीं है x2 की, और ये हमें पता है कि y1 और y2 की जो वैल्यूज़ हैं वो एक्चुअली कैपिटल Y1 और कैपिटल Y2 हमारे पास इक्वल है स्मॉल y1 और स्मॉल y2 के, और सेम इसी तरह z की वैल्यूज़ तो हमारे पास ऑलरेडी सेम ही रहेंगी। सो अब अगर हम कंपैरिजन करेंगे, तो अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारे पास z की वैल्यू सेम है और y की वैल्यू सेम आ रही हैं। तो जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हम सिंपली किसी एक रो में जाएंगे और कॉलम में जाएंगे। तो अब हमें ये पता है कि अगर हम रो वाइज x को चेंज करते जाएंगे तो हम उस जगह तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि y की वैल्यूज़ तो चेंज नहीं हो रही, सिर्फ x की वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। तो हम रो बाय रो अगर सर्च शुरू करेंगे तो ये हमें पता होगा कि हमें एग्जैक्टली y की कौन सी वैल्यू लेनी है, लेकिन x की कौन सी वैल्यू लेनी है उसको हम उसी टाइम पे कंपैरिजन उसकी शुरू कर देंगे। तो ये इस लिहाज से हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट आइडेंटिफाई करना चाहेंगे तो हमें इमेज में, क्योंकि इमेज में हमारे पास एक्स वाई होगी, z की वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास वहाँ पर अवेलेबल नहीं होगी। तो अब हमने क्या करना है, हमने एक्स वाई की सिचुएशन में y की वैल्यू सेम आएंगी, तो सिंपल हमने x की वैल्यूज़ को कंपेयर करना है कि क्या वो x की वैल्यूज़ आपस में मैच कर रही हैं कि नहीं। तो इस वजह से वो सर्च जो है हमारी काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। यहाँ पर हम लेक्चर को समराइज़ करते हैं। हमने ये देखा कि हम कैलिब्रेशन कैसे करते हैं। कैलिब्रेशन का मतलब ये है कि हमने कुछ वैल्यूज़ को अगर हम आइडेंटिफाई करें a की वैल्यूज़ को, तो हम ये कहते हैं कि अब हमारा जो कैमरा है वो कैलिब्रेट है, और हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इमेज जो आ रही है उसके लिए जो एग्जैक्टली w की वैल्यूज़ हैं 3D के, वो कौन सी लोकेशन पर लाई कर रही हैं। अब उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास कैलिब्रेट करने के लिए दो कैमरा हों या दो डिफरेंट लोकेशन से हम इमेज लें सेम कैमरा से। तो अगर हम ये करते हैं तो फिर हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा कैमरा जो है वो कैलिब्रेट हो गया है। और उसके बाद अगर हमने कोई 3D पॉइंट आइडेंटिफाई करना है रियल वर्ल्ड के अंदर, तो उसके लिए भी हम इस स्टीरियो इमेज को यूज़ कर सकते हैं। और हमने ये देखा कि अगर हम स्टीरियो इमेज लेते हैं तो अगर हम दो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना चाहें तो वो काफ़ी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है N4 का, और बजाय उसके कि हम 1 बाय 1 कंपैरिजन करें तो हम कुछ वैल्यूज़ जो हमें ऑलरेडी पता है हम उसको ज़्यूम कर लेते हैं, और जो हमें नहीं पता तो सिर्फ उसको आइडेंटिफाई करते हैं, जो कि इस सिचुएशन में x की वैल्यूज़ थी। तो यहाँ पर हम एहतिताम करते हैं और इसके बाद हम और डिटेल्स में जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।